Yes. So this is your fixed line L, and this is some another line. Suppose this is line M, and they are making some angle alpha intersecting at this point. ये intersecting कर रहे हैं at this point. Suppose this is a point. इसे मैं P कह देता हूँ. I don't want to say O. We have O is the representation for the origin. So I'm saying P. They are intersecting at P, and what happening now? Now this line is rotating about this fixed line. So what the shape will be coming? You know, this shape will be coming. This is called your cone. है ना? This point P. This is called vertex. This is the vertex. And this is the called. This is called. इसे क्या बोलते हैं? Anyone? Axis. है ना? इसके around rotate कर रहा है. That is axis. This line M is rotating about this line, so it is axis. And this M, this is called the generator. This is called generator because it is generating the cone. Generator of the cone. Okay, these three things are there. So this is a cone. Now, if I will cut this cone through a plane in different ways, it will give you different figures. Okay. Again, I am constructing a cone. Suppose this is a cone. ये कोन है आपका. अब क्या करूं? If I am cutting it through a plane, एक plane लिया हमने. So you can cut it in different ways. जैसे if I am taking a plane and I am just cutting it, how? When this is what? This is just plane is parallel to the this plane. इसकी अगर पैरेलल है तो क्या दिखेगा आपको? इफ इट इज पैरेलल टू दिस, क्या फिगर आएगी ये? एनी आइडिया? सिलेंडर सर. यस सर, फ्रस्टम ऑफ कॉन. ये फ्रस्टम ऑफ कॉन. नहीं, यहाँ क्या दिखेगा आपको अगर आपने कट किया तो? व्हाट इज द फिगर दिस शोइंग? सर्कल. सर्कल सर. सर्किल आएगा ये, है ना? नॉट इलिप्स, सर्किल. बिकॉज योर प्लेन इज जस्ट पैरेलल टू दिस. Okay, you have like this. This is the cone, and your plane is perpendicular to vertical axis. पूरा perpendicular है इस तरीके से. जब perpendicular कट करेंगे तो एक सर्किल फॉर्म करेगा, है ना? So what I am taking? Okay, sir, got it. Yes. So what I am taking? I am taking the section by a plane through the vertex. So what happening? So if you are taking the plane which is perpendicular to this एक्सिस, तो ये एक सर्किल देगा. नाउ इफ इट इज नॉट परपेंडिकुलर, आई एम टेकिंग सम एंगल लेस देन 90 डिग्री. कुछ एंगल पे कट करता हूं अगर मैं इसे, मान लीजिए अगेन आई एम टेकिंग सेम एंड आई एम कटिंग इट, है ना? ये कोन है पूरा आपका. एंड नाउ आई एम टेकिंग स्लैंट नॉट परपेंडिकुलर. नाउ स्लैंट. तो जब स्लैंट से कट करेंगे तो क्या आएगा? ये सर्किल. इलिप्स आएगा भाई. Eclipse है. हर बार सर्किल ही कोई आएगा. जब आपका प्लेन परपेंडिकुलर टू द जनरेटर है तब तो सर्किल है. बट इफ इट इज नॉट परपेंडिकुलर, इट इज मेकिंग सम एंगल लेस देन 90 डिग्री. यानी कि इसको मैंने थोड़ा सा स्लैंट कर दिया. It is cut at to slant. हाँ, स्लैंट कट कर रहा है. तो जब स्लैंट कट कर रहा होगा तो इट विल बी अ इलिप्स. ओके. नाउ आई एम टेकिंग अ प्लेन. Suppose now I am taking a plane like this here, and I am cutting this green plane you just see here, and I am cutting this इस तरीके से. इसे कट कर रहा है, ये आगे तक है. Now if you will see कि this will be, अब क्या दिख रहा होगा आपको? यहाँ पे कुछ इस टाइप की फिगर आ रही होगी ऐसे, है ना? What is this? पैराबोला. आर्क है, लेकिन अगर आप आर्क जब होता है, जब सिर्फ ये होता है, लेकिन ये आर्क पार्ट है आपका इस 3 डायमेंशनल फिगर का, तो क्या दिखेगा? ये पैराबोला, है ना? पैराबोला. हाँ, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है आपकी. कीप इन माइंड. तो इट विल बी लाइक दिस. यहाँ से आपने कट कर दिया तो यू विल सी इट विल बी अ पैराबोला. कोन इज अ 3 डायमेंशनल फिगर. दिस कोन
क्योंकि मैंने जनरेट किया है when I am rotating this angle. Okay. Again I am cutting this. I am taking another plane, suppose, and I am cutting it like this, parallel to this. When you will cut in this way, what will be coming here? You can see there it will be becoming an hyperbola. Hyperbola आएगा, ठीक है. ये फिगर अभी इस पे आपको समझ में नहीं आ रही होगी because it's 3-dimensional figure. So I have a small video where you can see these things. Just a minute. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, messages that forge brighter connections, and emails that get the job done, you need to think about more than just grammar and spelling. Is it visible? This sentence is grammatically, Yes, This sir. is Now Yes, sir. it is. but it's Good. word Now look at here. This is the video. Module, you will learn about conic sections. So here in this video, they have explained the conic section. When a straight line intersects a vertical line at a fixed point This is fixed point. and rotates about that fixed point, Okay. the surface obtained is called a double white circular cone. Is it clear? So what you are taking? You are taking a fixed line, and this line is taking some angle, rotating like this. तो इसे क्या बोलेंगे? What is this called? Double right circular cone. है ना? Double right circular cone. ठीक है. It is the figure of the cone. How the cone will come in the picture. A double white circular cone consists of two cones joined at a fixed point called the vertex. The line that rotates about the vertex is called the generator, and the line that remains fixed is called the axis. The right circular cone has a circular base, and its axis is always perpendicular line from the center of the base to the vertex. The perimeter of the base is called the directrix. This is called directrix. The lateral surface of a right circular cone is called a nap. The double white circular cone has two naps. The nap above the vertex is called the upper nap, and that below the vertex is called the lower nap. Also, the angle between the generator and the axis is called the vertex angle. This is the vertex angle. Sections. Now the important thing is conic section. तो ये वीडियो विजिबल है सबको? Yes, sir. हाँ. Good. So now the conic section which I was talking about. Now watch it very carefully. If a plane intersects a double white circular cone, we get two-dimensional curves of different types. These curves are called conic sections. Depending on the angle made by the plane with the vertical axis of the cone, This angle is we important. can cut the cone in three different ways. Okay. Ellipse. When the plane intersects the double white circular cone in such a way that the angle between the plane and the axis is greater than the vertex angle, we get a closed curve called an ellipse. When the plane is perpendicular to the axis, the ellipse becomes a circle. Thus, a circle is a special type of ellipse.
Parabola. When the angle made by the plane to the vertical axis is exactly equal to the vertex angle, we get an open curve called a parabola at the intersecting surface of the cone. Hyperbola. The plane intersects only one half of the double white circular cone as long as the angle between the plane and the vertical axis is greater than or equal to the vertex angle. However, if the plane intersects the vertical axis at an angle smaller than the vertex angle, the plane intersects both the naps of the cone to form an open curve called a hyperbola, which has two disjoint curves. Two disjoint curves. Degenerate conics. So these three conic sections are important: ellipse, parabola, and hyperbola. Okay. So now picture is clear to all of you. Yes, students. Yes, sir. Good. Yes, sir. Good. Absolutely. So in this way, you can see that because in your syllabus we have these three: parabola, ellipse, and hyperbola. And you know, circle is the special case of ellipse. When your major axis is equal to minor axis, your ellipse will become a circle. Right? So circle is the particular case. So these three conic sections, they have explained beautifully how you can get all these three conic sections. Right? So only what you are doing, you have a cone like this, double right circular cone, and you have a plane in your hand. So plane se aap how you are cutting this double circular cone. That is the thing only. If you are taking perpendicular to axis, it's giving you circle. You are taking at some angle, it is giving you parabola and hyperbola. So in this way, you can find all these things. So now we have another definition of this conic section. What is the definition now? Conic sections ki? Conic section. Now you know, you must have studied definition of conic section in terms of eccentricity E. याद है किसी को? In terms of eccentricity, एक E आता है. E is the ratio between two distances PS and PM. That is the definition. याद है किसी को क्या होता था? If E less than 1, E greater than 1, E is equal to 1. The eccentricity. No, sir. Actually, not recalling that. कोई बात नहीं, चलिए. So I am recalling here a conic section. या मैं इसको खाली कोनिक की बोल सकता हूँ, एक ही बात है. Is the locus of a point P which moves in such a way that its distance from a fixed point S, ठीक है, एक point है P, it moves in such a way that its distance from a fixed point S. Means what? Suppose I am taking, you know, all these conic sections, they are just two-dimensional pictures. Means they are figure in the plane. They are plane curves, I can say. Cone आपका 3-dimensional figure है, double right circular cone. उस cone से when I am cutting through a plane, so you are getting plane curves, 2-dimensional pictures. 2-dimensional means I can plot in on XY plane. XY plane आपका 2-dimensional plane होता है ना, इसकी dimension 2 होती है XY plane की. So here I can plot anything which I can plot on XY plane. It is called 2-dimensional picture. So here I have a point P. Suppose, so what I am saying कि you have a point P here. Definition के लिए explain कर रहे हैं. Suppose I have a point P here.
and it is moving in such a way that its distance from a fixed point S. Suppose I have some fixed point S here. It is not necessary that it should be on x-axis. Only just to explain, I am taking this point as this point P. You know? So the distance के लिए you have to join, because it's a plane curve. I can join by a straight line. This is a plane curve in such a way that its distance from a fixed point S, that means PS, is in a constant ratio to its perpendicular distance from a fixed straight line. Okay, from a fixed straight line. Fixed straight line, suppose I am supposing this is your fixed straight line. Suppose this is your fixed straight line. इससे अगर मैं distance, अब distance क्या होती है from point से, just take a perpendicular on the line, it will be the distance. जो perpendicular distance ये होती है line. Suppose it is m. So the PS and ratio with the distance, perpendicular distance from the point to a fixed straight line. This should be constant, fixed. Okay, all being in the same plane. सब एक ही plane के अंदर है, of course, क्योंकि आपके पास ये plane curves देते हैं. All being in the same plane. ठीक है. ये जो रेशियो है, किसका रेशियो? PS अपॉन PM. इफ दिस इज सम कांस्टेंट, इस तरीके से अगर कोई पॉइंट मूव कर रहा है तो लोकस, और लोकस क्या होता है? जो पाथ होता है. तो एक पॉइंट आपका इट इज मूविंग इन दिस वे, ऐसे मूव कर रहा है कि ये पॉइंट यहाँ पहुंचा तो यहाँ PS PM, यहाँ पहुंचा यहाँ PS PM. दे आर ऑलवेज फिक्स, क्योंकि दिस पॉइंट विल बी मूविंग हियर हियर हियर. तो वेयर एवर दिस पॉइंट इज गोइंग, सपोज इफ दिस पॉइंट रीच हियर, तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगी S और PM से, वो all these distances should be constant. Then we say that this locus will form a conic section. ये एक conic section बनाएगा. अब वो जो रेशियो है वो क्या होगा, उस वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि इट मे बी पैराबोला, इट मे बी ellipse, it may be hyperbola. This constant ratio is called eccentricity basically. So if I am taking PS upon PM, तो इसको अगर मैं फिक्स कर दूं सम E से, सपोज दिस E is called eccentricity. Okay, eccentricity. So this is fixed E. Now there are three possibilities are there. First, E is equals to 1, तो पैराबोला. अगर लेस देन से कह दें, ऑर्डर में चलते हैं, लेस इक्वल ग्रेटर. इफ E less than 1, then it is ellipse. Ellipse. Locus is ellipse. Locus का मतलब कर्व आपका. If Yes sir. E is equal to 1, then पैराबोला. then the locus is parabola. And if E greater than 1, then it is Hyperbola sir. yes, Hyperbola. hyperbola. ये आपके पास फिगर्स है ना, and you know how they look like. Ellipse को अगर मैं बनाऊं taking center at the origin, suppose for a moment, तो ये आपका ellipse आता है. This is your major axis, this is your minor axis. अगर पैराबोला बनाए हम y square is equal to 4ax, तो it is the hyperbola है ना. ये स्टैंडर्ड फिगर्स है, जरूरी नहीं है कि वर्टेक्स ओरिजिन ही हो, वर्टेक्स कहीं भी हो सकता है. I am taking the standard figures which you are familiar with. I can take anywhere. And this is the hyperbola. Hyperbola, there are two non-intersecting curves है ना, ये hyperbola होते हैं. ये इसका बीच में इनके two vertices है. This is the origin, ये y axis है. ये standard figures हैं. But it is not necessary कि their vertex should be origin or their center should be origin. कहीं भी हम plot कर सकते हैं, depend करेगा what is the equation. So this E will give you the 3 only. So it is the definition ना. ये तो मैंने आपको geometrically explain किया था. So what is the geometrical picture? Geometrically how you will get all these things. But definition, if somebody asks what is the conic section, then you will tell this definition. It is the locus of a point which moves in such a way that its ratio between the
distance the point P with a fixed point and the distance with a fixed line is always constant. अब इसमें ये जो स्ट्रेट लाइन है, दिस फिक्स स्ट्रेट लाइन, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, इसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, इनके भी नेम है, यू नो इन मैथमेटिक्स एवरीथिंग हैज सम नेम, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स एंड दिस इज और क्या था इसमें, फिक्स पॉइंट एस था, है ना, ये जो एस है जिससे लिया है, दिस इज कॉल्ड, क्या होता है ये, फोकस। फोकस, यस, ये फोकस होता है, आपको पता है, इसके कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं, ए कॉमा 0, डिफरेंट उसमें निकल के आते हैं फोकस, और फोकस ऑफ द कोनिक सेक्शन फिक्स स्ट्रेट लाइन इज द डायरेक्ट्रिक्स एंड दिस इज द वर्टेक्स, ये जो आपके पास बन के आई थी इट इज वर्टेक्स, ओके, एंड ये जो कर्व प्लॉट होके आएगा ये डिपेंड करेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, तो दिस इज द थिंग, बेसिक थिंग। नाउ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ कोनिक, देखो ये जो मैंने कोनिक लिखे हैं ये आपको मालूम है दे आर स्टैंडर्ड, जैसे ये था, इसकी इक्वेशन थी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये था इट वाज x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इट वाज x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल, so these are the different equations, है ना, of the standard conics, जिसका वर्टेक्स ये सेंटर एट द ओरिजिन पर है और ये आपका राइट हैंड साइड पे, बट व्हाट इज द जनरल इक्वेशन, वी हैव अ जनरल इक्वेशन ऑफ अ कोनिक सेक्शंस, उस जनरल इक्वेशंस में डिफरेंट कंडीशन से वी कैन गेट दीज डिफरेंट कोनिक सेक्शंस, सो जनरल इक्वेशन ऑफ अ कोनिक, तो यहाँ पे आपको एक चीज तो क्लियर हो रही है कि इट इज अ 2 डिग्री इक्वेशन, है ना, देखो सब में पावर 2 है, तो इट इज क्लियर कि जो भी इक्वेशन ऑफ कोनिक है दैट इज सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, है ना, देखिए व्हाट इज द पावर, हाईएस्ट डिग्री 2, so it is a second degree polynomial of course, so general equation of, Yes, sir. general equation of a conic या conic section है की बात है, as I told you, so I will take, suppose let S alpha beta be the focus, क्योंकि हमारे पास पॉइंट्स है तो उससे कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो आई एम अज्यूमिंग कि यू हैव सम कोऑर्डिनेट ऑफ दिस फोकस, तो मैं आई एम टेकिंग हेयर एनीवेयर, सपोज हेयर, जब मैं यहाँ पर इसको इसे ना लेके कि यू विल गेट कंफ्यूज कि ऑलवेज यू विल बी टेकिंग द वाई एक्सिस, ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी लाइन को मैं डायरेक्ट्रिक्स ले सकता हूँ, आई एम टेकिंग एनी आर्बिट्रेरी लाइन, सपोज दिस इज योर डायरेक्ट्रिक्स, ओके, तो अगर ये डायरेक्ट्रिक्स है तो व्हाट यू विल टेक, here you have some, suppose S alpha beta, and here you have some point, suppose P, this is point P x y, इस पॉइंट का लोकस हमें निकालना है, तो लोकस के लिए क्या करना होगा, you know, you will take the distance between P and S and you will take the distance between S and, इसको हम कुछ कह दे, मान लीजिए इसे N कह देता हूँ, and यहाँ पे से अगर ज्वाइन कर दें here, it is some m. So let S alpha beta be the focus and suppose ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इक्वेशन मान ली, and ax plus by plus c is equal to 0 be the equation of the डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स आपको गिवन होगी फिक्स लाइन जो है, तो व्हाट इज द डायरेक्ट्रिक्स, तो मैंने जनरल इक्वेशन लिखी है, यू नो इट इज अ इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन 1 डिग्री, ax plus by plus c is equal to 0, अब p हमारा कोई पॉइंट है जो मूव कर रहा है, तो हमने मान लिया कि p कोऑर्डिनेट xy है, लेट p xy be any point on the conic, then you know by the definition we have ps upon pm is equal to e, है ना, ये रेशियो e होता है, और यू कैन से इफ मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो ps स्क्वायर इज इक्वल टू e स्क्वायर pm स्क्वायर, स्क्वायरिंग क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज आई विल फाइंड अ डिस्टेंस बिटवीन ps, और डिस्टेंस आएगी स्क्वायर रूट में,
अगर हमें सॉल्व करना आई विल हैव टू रिमूव ऑल द स्क्वायर रूट्स, तो मैंने स्क्वायरिंग ही कर दिया। इसे आपने क्या कह दिया, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एम क्या, एम इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। यहाँ पर एक्स एक्सिस पे नहीं है, यहाँ कहीं पर भी हो सकता है। इज इट क्लियर? नाउ आई विल Yes, सॉल्व। sir. हाँ, बस इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके जो इक्वेशन आएगी वही आपके पास होगी। अब पी एस कितना, हाउ मच पी एस, यू नो डिस्टेंस प्रॉब्लम बिटवीन दीज टू, सो दिस आई कैन राइट, पी एस स्क्वायर है तो आई कैन राइट x माइनस एल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर। एंड व्हाट इज पीएम, पीएम कितना हुआ, कोई बता सकता है व्हाट इज पीएम? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ गिवन लाइन, लाइन की इक्वेशन आपके पास अगर ये है तो नहीं पता, कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई कर देंगे लाइन के अंदर, तो कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई है तो एक्स वाई ही लिख लीजिए, बिकॉज आई वांट टू राइट अ जनरल इक्वेशन, एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस, ए स्क्वायर, लेकिन अंडर रूट इसलिए नहीं क्योंकि स्क्वायर लिया हुआ है तो इसका स्क्वायर रूट तो रिमूव हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है इफ यू हैव अ लाइन सम ए एक्स प्लस बी वाई, यहाँ पर कोई पॉइंट हो आपका मान लो 1,2 और ये का लाइन की इक्वेशन है आपके पास 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट से यहाँ की डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट को रख देते हैं इस पे 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, इससे जो भी निकल के आता है डिस्टेंस निकल आती है। ओके, तो इसका मॉड रख देते हैं क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव में होती है, कभी ये नेगेटिव आए। वही मैंने यहाँ किया, आई हैव सेटिस्फाइड द पॉइंट हियर एंड जस्ट टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, बट स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट रिमूव किया। सो ऑन सिंप्लीफाइंग वी गेट, तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको एक पॉलिनोमियल मिलेगी सेकंड डिग्री की इस टाइप की, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x(y) प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे टर्म क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा आपके पास यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को आप एक साथ जब करेंगे तो ई स्क्वायर वॉट एवर दैट इज, उसको मैंने स्मॉल ए लिख दिया है क्योंकि दैट विल बी सम फिक्स क्वांटिटी। सिमिलरली वाई स्क्वायर का Okay, टर्म sir. आएगा, वाई स्क्वायर ना, और जब आप यहाँ होल स्क्वायर देखिए खोलेंगे तो क्या टर्म आएगा 2ab(xy), तो वो एक्स वाई का टर्म आ गया यहाँ पे, एक्स का टर्म आएगा साथ में, वाई का है ना, एक्स का टर्म यहाँ से आएगा -2α(x), वो एक्स टर्म हो गया, -2fy कुछ कांस्टेंट। इसको मैंने आई एम राइटिंग इन दिस वे, the ah they are some fixed quantity. The point is you will be getting this second degree polynomial, second degree की polynomial है ना, which Yes, sir. represent, इसी यही आपका conic section represent करता है, which represents the equation to a conic section। यही conic section की जनरल इक्वेशन है। अगर somebody ask what is the general equation of a conic section, this is the general equation of a conic section। ठीक है, अब ये कब सर्किल एलिप्स बनेगा वो कंडीशन हम अभी बताएंगे, बट दिस इज द इक्वेशन। इज इट क्लियर? सो दिस इज द जनरल इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x(y) प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन एंड इट इज अ, बिकॉज इट्स अ प्लेन कर्व यू नो, सो इसलिए इसमें आपके पास xy कोऑर्डिनेट, xy कोऑर्डिनेट का मतलब ये प्लेन, अगर z कोऑर्डिनेट आ जाता तो 3 डायमेंशनल फिगर हो जाता। I have only this. Now the nature of the conic determined by the quantity, कि कौन सा कोन होगा, तो the nature I can find now, the nature, ये क्वेश्चन 2 थी आपकी, the nature of the conic can be determined by the two things I need,
following quantities. क्या एक तो I will take delta, delta इसका हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो सेकंड डिग्री के टर्म्स हैं उन्हें तो लिखेंगे डायगोनल में। तो सेकंड डिग्री का टर्म आ गया आपके पास A B, इसे ऐसे लिख देते हैं A H G A H G, ठीक है। और इधर क्या आ गया B F F C, ठीक है। ये आपका होता है डेल्टा। तो हमने डेल्टा इससे कोएफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट बनाया 3/3 का, तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट A, वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट B एंड द कांस्टेंट C आ गया, और एक्स वाई का कोएफिशिएंट H था H G G, ये P है, ठीक है। ये डेल्टा है आपका। और एक क्वांटिटी आई विल टेक डेल D will be AB minus H square and one more quantity P को मैं कह देता हूँ A plus B, sum of the coefficient of X square and Y square. These three quantities I have. Now first, देखिए टाइम कम है, अगर टाइम आपका आउट हो जाएगा तो आई विल कंटिन्यू योर क्लास। टाइम क्योंकि 40 मिनट्स की क्लास, जूम में 40 मिनट से ज्यादा क्लास नहीं दे सकते है ना, बिकॉज इट्स नॉट पेड। तो आई विल कंटिन्यू टुमारो विद द सेम टॉपिक एंड आई विल शेयर 2 days लेक्चर। ओके Okay, sir. Okay, sir. हाँ Okay, sir. Okay. Zoom में